Symbiosis Public School is one of the leading schools in Bundu. Our school is situated 40 km from Ranchi, Jharkhand, although it is situated in rural area. But the facilities that we get in our school are as good as comparison to any quality of educational institution from urban areas. Our school mainly focuses on all-round development and holistic learning that brings every part of student together with body, mind and spirit. At Symbiosis Public School, we nurture the innate potential of our students and mold them into passionate, committed, competent and value-based individuals with leadership qualities. They have been runner-ups and finalists at inter-school competitions, competing with high-class schools. This one is very good school, very good infrastructure and good faculty, good teachers, as well as students are very hardworking. आपने मंदिरों के बारे तो जरूर सुना होगा और मंदिरें भी अलग अलग तरह की मंदिरें होती है, अलग अलग भगवान की मंदिर होती है जहाँ पर हम सभी प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, ईश्वर से कुछ विश मांगने के लिए जाते हैं और वहाँ पर हमारी मन्नत भी पूरी होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद सिपाही और मैं हूँ आपके साथ अमित दत्ता और आज हम एक मंदिर पर आए हुए हैं और वो मंदिर शिक्षा का मंदिर है। हम अभी सिम्बोसिस पब्लिक स्कूल के कैंपस पर अभी हम पहुँचे हुए हैं और क्योंकि पंचपरगना क्षेत्र में इस स्कूल का नाम काफ़ी विख्यात और प्रख्यात के रूप से जाना जा रहा है, आखिर ये स्कूल का नाम इतना फेमस क्यों है? कुछ बच्चे बताते हैं कि सिम्बोसिस स्कूल इज़ द वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन इन आवर पंचपरगना। तो हम सीधे चलेंगे बच्चों के पास और जानेंगे इस स्कूल का हाल कि किस प्रकार से बच्चे यहाँ पर एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं। सिम्बोसिस पब्लिक स्कूल के कैंपस के अंदर हम इंटर कर चुके हैं और यहाँ पर कॉन्फ्रेंस एक हॉल है जहाँ पे कुछ बच्चे लोग बैठकर अपना डिस्कशन कर रहे हैं। तो हम सीधे अंदर घुसते हैं और बच्चों से जानेंगे कि क्या कुछ विषय पर वो लोग डिस्कस कर रहे हैं और कुछ क्वेश्चंस उनके साथ भी करेंगे। तो आइए चलते हैं कॉन्फ्रेंस हॉल की ओर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, सिट डाउन प्लीज। Just tell me, why is the Symbiosis Public School is good option for the students? Yes sir, our school is situated 40 km from Ranchi, Jharkhand, although it is situated in rural area. But the facilities that we get in our school are as good as comparison to any quality of educational institution from urban areas. Our school mainly focuses on all-round development and holistic learning that brings every part of student together with body, mind and spirit. Symbiosis Public School is one of the leading schools in Bundu, catering all the needs of every child with its excellent infrastructure, modern laboratories with all apparatus needed, teaching aids and mostly the dedicated teachers of our school made our school special and best option for the student. यहाँ पर कंप्यूटर लैब की भी सुविधा उपलब्ध कराई गई है। तो सिम्बोसिस पब्लिक स्कूल के कैंपस पे भी मौजूद है और यहाँ पे जो कंप्यूटर लैब है, यहाँ पे बच्चे छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो कंप्यूटर सीख रहे हैं। तो सीधे अंदर आते हैं और देखते हैं किस प्रकार से जो है इन्हें कंप्यूटर की शिक्षा दी जा रही है। What's your name? My name is Deepika Kumari from Standard 6A. Actually, I am writing a letter. Okay. I don't know how to write a letter on a computer, so I am training it. Okay, Ishan, just tell me, if you have to describe about your teachers, Yes. how do you? So every teacher is unique in themselves, but they all focus on the well-being of the students. Almost in every subject, teachers promote learning through activity and experiments. In Hindi or English, teachers play role play and dialogue writing and per discussion to make the concept clear. Activity-based learning is always been a part of our school. और ये केमिस्ट्री का लैब जो है काफ़ी देख सकते हैं वेल maintained है। Potassium dichromate and this is lead nitrate. Okay. When we will mix both two, then the color will change. The color changes to yellow. Precipitated forms. तो यहाँ पे बच्चे जो है अपने स्तर से जो है प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं। बात करें सिम्बोसिस पब्लिक स्कूल की, यहाँ पे जो लेबोरेटरी है जो केमिस्ट्री की लैब है, ये काफ़ी तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं, काफ़ी इक्विपमेंट्स हैं यहाँ पे। बच्चों को सीखने के लिए यहाँ पे जो चीज़ों की सुविधा होनी चाहिए
वो हमें तो यहाँ नज़र आ रही है बिल्कुल स्पष्ट तरीके से। My name is Nandini Kumari and I'm here PGT chemistry teacher. PGT chemistry teacher. Yes, sir. Okay. Just tell me then how you manage the classes. Classes are classes are going very smoothly. While explaining the theory portion in the class, we are just do the experiment in the laboratory. Ma'am, just tell me that why should anyone join Symbiosis Public School? This one is very good school, very good infrastructure and good faculty, good teachers, as well as students are very hardworking. The very basic thing that students are very hardworking. They are very they take interest in doing practicals, doing experiments. All things are very fantastic. Sir, this is a compound microscope. Sir, Neon Hook is invented this, and we can see the things like bacteria and unicellular organism. This is Suman Singh Munda from class 9C, and this is a skeleton, and we call this a skull, and this is jaw. Skull is for the protecting the brain because it's very sensitive organs, and this was the eye structure, and this was nose, and this was called as backbone, and also it's for weep. अभी हम यहाँ पर अटल टिंकरिंग लैब एक है जहाँ पर अभी पहुँचे हुए हैं और यहाँ पे बच्चों के साथ में हम लोग जुड़ेंगे क्योंकि इस लैब के अंदर में बच्चे लोगों को क्या कुछ शिक्षाएं दी जा रही है, क्या कुछ बताई जा रही है। हम सीधे बच्चों के बीच में जुड़ेंगे और बात करेंगे। Actually, this is a breadboard, and from this we have connected a buzzer which is connected with this breadboard connection, and this is a voltage regulator, and we have connected this with IR sensor, which main application is which we can use it as object detector. As you can see, this buzzer buzz when we obstruct it with any object. प्रत्येक स्कूल के एक स्टडी रूम होती है जिसको कहते हैं लाइब्रेरी, और सिम्बोसिस पब्लिक स्कूल में भी एक लाइब्रेरी हमें नज़र आ रही है। यहाँ पे सभी सब्जेक्ट की पुस्तकें हैं, साइंस, SST, हिंदी, इंग्लिश, और रेफरेंस बुक भी है, करंट अफेयर्स के बुक हैं, टीचर्स लोग के लिए भी बुक है, बच्चों लोग के लिए भी स्टोरी बुक है, ग्रामर है, ग्रामर सेक्शन है, और रेफरेंस बुक से है, कुछ डिक्शनरी वगैरह है, उसके अलावे जो मैथमेटिक्स वगैरह है, जो स्कूलिंग जो बुक्स वगैरह होती है वो सारे बुक्स यहाँ पे दिख रही है हमें। और जानकारी यहाँ पे हम आपको और भी यहाँ पे दिखाते हैं, कुछ ऑथर्स के भी बुक्स यहाँ पे हमें नज़र आ रही है, तो हम आपको ऑथर्स के भी बुक्स के बारे में दिखाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ प्रेमचंद रंगभूमि है। My name is Dipanvita Bhattacharjee and I have been associated in the school since the last 3 years. And I'm not only the English teacher of the school, but I'm also involved in the co-curricular and extracurricular activities in the school. How you manage the classes and curricular activities? Sir, actually, fortunately, my subject is such that it includes the co-curricular activities. So, whenever I teach English, I focus on the pronunciation skills of the students. I also organize elocution competitions within the class and prepare my students for the inter-school competitions. And trust me, our students, they have been runner-ups and finalists at inter-school competitions, competing with high-class schools from other towns and states as well. And even in sports, in case of sports, they have won inter-school tournaments, interstate tournaments, and there are a lot of awards and prizes that you can see in the school office. Symbiosis Public School being the only affiliated senior secondary school in this area, and we aims at overall development of each and every individual by involving them in both curricular and co-curricular activities.
our student maintain a very good balance between these both activities, and they have set a benchmark in each and every activities. Either they are participating in the inter-school competitions, different state level competitions and different national level examination. In future, I want to see my students qualifying different examinations like NEET, G-Men's, Advanced, CLAT, and bringing laurels to their parents, the school and the family, and to laurels to the area which they belong. The teachers of my school are very supportive. Every teacher is unique in themselves and they focus on the well-being of every student. They promote us on the hand-on learning through different kind of activities and experiments. Our school imparts moral education and strictly follow the discipline protocols. Especially noted students given chance to improve by guidance session. We have counselors appointed. They guide us, motivate us and strengthen our willpower. Yes, of course, our school promotes activity-based learning. Well, all the children learn at their own pace through various activities, and all our teachers focus on group-based activities to demonstrate various concepts using real objects, experiments, and also there are regular quizzes held after the completion of each chapter. And overall, activity-based learning has always been a part of our curriculum. हम लोग ये बच्चों को चाह रहे हैं कि एक साथ बच्चों को बैठा के उन लोग का फियर को फर्स्ट हम लोग फियर को दूर करें, ताकि बच्चे और टीचर्स में एक फ्रेंडली बिहेवियर रहे, बच्चे डरे नहीं. Very good.